Good evening everyone. तो समस्त को शुभ संध्या आशा करूँ आप समस्ते भल थे खुशी थे जय जगन्नाथ चलते लेट नक स्टार्ट कर आज सेशन देखिए रोज आगू ओटीटी एग्जाम आसटी सीटीएट और OSTT सब एग्जाम इंपोर्टेंट आज सेशन चलते लेट नक स्टार्ट करवा आज यूनिक सेशन जोटा रोचे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस क्लास 3 रोचे जो थी कि आज आम डिस्कसन करवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण अपकमिंग एग्जाम निहाती इंपोर्टेंट तो आज क्लास किसी यूनिक रोचे क्वेश्चन आज किसी यूनिक रोचे ओके तो फास्ट कंफर्म तो ऑडियो वीडियो ठीक ठाक सब समस्त स्टार्ट करवा टे शेयर कर दे जदी क्लास भल लागिवो क्वेश्चन भल अछि शेयर करिवे नहले शेयर करिवे नाही ओके तो एगन कहि रखु जो माने टेलीग्राम जॉइन करना हाती टेलीग्राम रे जॉइन हि जिवे ये होछि टेलीग्राम चैनल विद्वान गैलेक्सी आपण सर्च कर जॉइन हि जिवे गुड इवनिंग क्योसनी जो माने टेलीग्राम जॉइन है नांती जॉइन होते विद्वान गैलेक्सी सदर क्लास पर आपण माने पीडीएफ मध्ये पाई परिबे ओके तो चलंतु लेट न कर स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखंतु फटाफट आंसर देबे सी कहूछि व्हिच द फॉलोइंग विल मोस्ट एप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग कोटा मानक भितरु मैक्सिमाइज करि परिबा आपण मानक लर्निंग को ओके 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 हां चलंतु कोन कहूछि इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट्स शुड बी स्मूथेन बाय पेयरिंग सिमिलर स्टूडेंट देखो फर्स्ट कोन कहूछि इंडिविजुअल डिफरेंस करिबा स्टूडेंट मान को मानकर कोन जो माने भलो स्टूडेंट 90% एभो रखते ताकू उटे ग्रुप करबा जो माने 30% बिलो रखते ताकू उटे ग्रुप करिया सेमति कोन करबा इंडिविजुअल ग्रुप करबा सिमिलर स्टूडेंट को नै टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल स्टूडेंट ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड बी कीप इन द सेम क्लास टू एवर डिफरेंस इन ओपिनियन देखो को माने गोटे जाति रो गोटे कास्ट रो गोटे रिलीजन रो पिला मानन को बा बैकग्राउंड को जो संभ्रांतशाली लोक मान स्टूडेंट मान को गोटे ग्रुप कर दबा तो सेमिति करी डिफरेंट कोन करिया ग्रुपिंग करिबा फोर्थ कहूची टीचर शुड फोकस ओनली ऑन लर्निंग स्टाइल टू ब्रिंग ऑप्टिमम रिजल्ट ना ओनली ऑन लर्निंग स्टाइल ओनली नेगेटिव बड ये हे परिबो नै कोन तो कोन आसीबो मोर एप्रोप्रिएट कोन आसीबो कोन देखो प्रथम कथा फास्ट हाई परिबो नाही काहे किसी कहूची से डिफरेंस कथा कहि दिला इंडिविजुअल डिफरेंस कथा हो नाही लास्ट हमने ओनली वन लर्निंग कहूची एठी मध्ये कला कल्चरल बैकग्राउंड को नै से माने को डिफरेंस को एपिरियड कोन बताले टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल तो टीचर स्टाइल कॉग्निटिव स्टाइल और स्टूडेंट रो स्टोरी स्टाइल जदी मैच होउची सेम रहउची ताहले बियाते कोन हो मैक्सिमाइज लर्निंग हो आंसर हो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बुझी पाले कांसेप्ट कोन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बुझिबे ये होची आंसर बी क्वेश्चन नंबर 2 रे आंसर दियंतु कोन कहूची लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस डेस लर्नर जने पढी परिबो नाही केते पर्यंत पढी परिबो नाही दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्कूल एम्स ऑफ एजुकेशन दे नो दैट द मटेरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन अ डेली बेसिस कोन तो भलो भलो क्वेश्चन अछि सब के शेयर कर देबे जो देखु शेयर कर देबे मौसमी जय जगन्नाथ चले क्वेश्चन आंसर दे लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न जे पर्यंत स्टूडेंट्स माने लर्नर माने प्रिपेयर हेई नांती पढिया पई तमे पढी परिबो ना यस और नो तमे जहा करो जे पर्यंत लर्नर माने प्रिपेयर हेई नांती पढिबा पई तमे पढै परिबो किना तो सर जदी ता माने कोन पिला मान पछरा हबो स्टूडेंट तो माने रेडी अछि तो पढिया पई तो समस्त मना करिवे तमे पढेबनी गप कोइ पढि आसीबो ना डांस करि पढि आसीबो ना सेमिति नो एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो से मानन को प्रिपेयर हो पाई डिफरेंट वे अप्रोच करिवो बुझिला कि नै देन से मान कोन करिवे प्रिपेयर हेबे लर्न करिया पाई से मान डायरेक्ट बना करिवे त तुमको कोन करिया पड़िवो तांको मनेया को पड़िवो तांको प्रिपेयर करिया को पड़िवो लर्निंग करिया पाई देन कोन करिवो तुम पढेबो तेनु लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न जे पर लर्नर चाहि नै पढेबो ताको क्रिएट करिवो से तुम पढिया को इंटरेस्ट क्रिएट करिवाला ऑप्शन सी इज मोर एप्रोप्रिएट प्रणाम जगन्नाथ चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रे आंसर कोन बस सी क्वेश्चन 3 आज भलो भलो क्वेश्चन छला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग कोंतु इमिटेशन मीनिंग मेकिंग कंडीशनिंग एंड रोट मेमोराइजिंग कोन हो आंसर 2 नंबर सी हो तीनो आंसर दियो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल ऑफ लर्निंग आलोक सी ठीक अछि
द इमिटेशन कोन जे जा करिवो मु से करिवो से जिंस हला मीनिंग मेकिंग आंसर कोन सेंटर ऑफ लर्निंग माने मीनिंग मेकिंग ऑप्शन बी फोकस करा वाला ऑप्शन बी हो जे क्वेश्चन आंसर यस वेरी गुड बी यूज कर आंसर गायत्री ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 मीनिंगफुल लर्निंग इज अ डैश जोटा कहली मीनिंगफुल लर्निंग ता कोन पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स इमिटेशन ऑफ एडल्ट एंड मोर एबल पीयर्स passing receiving of the given information active creation of knowledge structure from personal experience कोन आसीबे क्वेश्चन मीनिंगफुल लर्निंग ता कोन एक्चुअली देखो कोन आसीबो passing and receiving of the given information passing receiving तो होबा नै नेगेटिव वाला passive receiving pairing and association between the stimulus and response को प्रथम सेकंड हो इमिटेशन तो होबा नै जस्ट कहि जेटा कोन एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ठीक अछि डी आंसर प्रति प्रकाश बी होबा नै डी हो हला ऑप्शन डी हो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मु करिया क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग कोटा लर्निंग को इफेक्ट पकाय को मोटिवेशन ऑफ द लर्नर हां नियते हमरे मोटिवेशन द लर्नर को इफेक्ट पकाय मैच्योरेशन ऑफ लर्निंग हां ठीक अछि टीचिंग स्ट्रेटजी ठीक अछि फिजिकल इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर ये इफेक्ट पकाय कि हां फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ मध्ये कोन पकाय इफेक्ट पकाय फिजिकल हेल्थ माने कोन मन को ज्वर हेतिबो ठंडा हेतिबो सेही समय तो इफेक्ट पकाय इमोशनल हेल्थ माने कोन ब्रेकअप हेछि ना कोन दका हेछि घरे झगड़ा लाग जति तो ये ऑब्वियसली इमोशनल कोन हो इफेक्ट पकेबो तो सबुडा को आंसर गवर्नमेंट ऑप्शन ए कोन हो ए बी सी डी सबुडा को आंसर ए ऑल सुकांती प्रणाम बुझी पाले कि नहीं प्रीति प्रथमेश गायत्री वाला से आंसर हो ऑप्शन ए चलो 5 नंबर ए हो आंसर मजे आंसर देई नहीं जमाला क्वेश्चन नंबर 6 सबुडा आंसर बाहरी आछि ना आज मु आंसर उडी दिछि आंसर थिले सिना आसीओ टोटल उडी दिछि 6 नंबर आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग देखो टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग कोन आसीबे आंसर देखो जवन पढी थे प्रॉपर्ली आराम से कहि परिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट एटा टीचर रिलेटेड होबो कि एबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस नेचर ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर को तो टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग कोन 6 रो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट ता होबो कि रे ना एबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस कथा को होबो कि रे टीचर ना नेचर ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ना आंसर विल बी मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रथम कथा टीचर रेडी देइछ माने कोन होबो आपण वे प्रोसेस ऑफ टीचिंग और सब्जेक्ट मैटर आपण मास्टर दरकार आंसर विल बी ऑप्शन डी हो आंसर क्लियर गायत्री प्रथम सुकांती लिसा मन आंसर होबो डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 a teacher always helps her learners link the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from other subject area this helps to promote this कोन आसीबो आलोक शेयर करिसो आलोक मनलेसा लिसा सुकांती प्रथमेश गायत्री जो माने देखुजंदी तो आशा करी आपण टे शेयर करिवे क्वेश्चन आंसर जे कोन हबो टीचर ऑलवेज हेल्प्स हर लर्नर लिंक द नॉलेज दे हैव डिराइव्ड इन वन स्पेसिफिक एरिया टू अदर सब्जेक्ट एरिया दिस हेल्प्स टू प्रमोट दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना लर्नर ऑटोनॉमी रेनफोर्समेंट कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज तो कोन हबो यस ये कोन हबो कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑप्शन डी होचे क्वेश्चन आंसर रन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करिवा 8 नंबर when previous learning makes no difference at all to the learning in a new situation it is called as देखो previous जहा पढी छथि learning ता difference को नाही वर्तमान में पढा होछ new situation ले एटा कोन को आब and when previous learning makes no difference at all to the learning in a new situation it is called as positive transfer of learning negative transfer of learning zero transfer of learning absolute transfer of learning तो कोन अब ताले एठी कोन आसीबो जेहेतु नो आसुछि नो डिफरेंस आसुछि नो डिफरेंस माने कोन आसीबो जीरो ट्रांसफर ऑप्शन सी ए होबो नाही डी होबो नाही एब्सोल्यूट ट्रांसफर न होय पॉजिटिव ट्रांसफर नो डिफरेंस ब्रा प्रीवियस लर्निंग सहित वर्तमान न्यू जो लर्निंग सिचुएशन आसुछि ताको भीतर नो डिफरेंस जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ओके आंसर विल बी ऑप्शन सी डी देखाउछि ऑप्शन सी जीरो ओके नेक्स्ट को मु करिया ताले पॉजिटिव एटा न the most important factor in the effective teaching process is dash कोंतु most important factor in the effective teaching process is dash कोन आसीबो देखो punctuality exhibited by teacher and student punctual on time आसीबो पाठ जा हो न on time आसीबो हला
क्लास दिन 10टा माने केबे स्कूल का टाइम पे 9:30 तो 9:30 रे पहुंच सकाल पंक्चुअल होवा दरकार टीचर माने मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर ये चलिबो टीचर स्टूडेंट डायलॉग हाँ चलिबो टाइमली कंप्लीशन सिलेबस एटा तो हबो नाही एटा तो कबे हबो नाही ये हबो नाही हैला ए जे मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर स्टूडेंट डायलॉग तमे जहा करो मोस्ट इफेक्टिव कोन हबो जदी मास्टरी ऑफ कंटेंट बाय द टीचर सब भलो पढौछ तो ये ठीक अछि बट टीचर सेंट्रिक चाइल्ड सेंट्रिक कोडा हबो जदी टीचर स्टूडेंट भीतर डायलॉग होछि कथा वार्ता है कि सने पाठ पढुचंती कोन डिस्कशन को पढुचंती तो एटा चाइल्ड सेंट्रिक हबो त आंसर हबो टीचर स्टूडेंट डायलॉग मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कोन हबो इफेक्ट पकेबो टीचिंग प्रोसेस रो टीचर स्टूडेंट डायलॉग ऑप्शन सी होछि आंसर ओके नेक्स्ट मूव करिवा ए क्वेश्चन आंसर दियो 10 नंबर presence of identical elements between already learned skill and new skill result dash कोन presence of identical elements between already learned skill and new skill result dash negative transfer positive transfer generalized transfer zero transfer कोन हबो देखो identical element between already learned जोड़ा पढिछ आ न्यू स्किल भितरे जदी आइडेंटिकल एलिमेंट रहउछि त सेटा कोन कहै छिबो ऑब्वियसली एटा कोन होइ छिबो पॉजिटिव ट्रांसफर आंसर नाही कारी कोन अब ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रांसफर होछि क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी बुझिले कि नै कोन बतले ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रांसफर जीवा नेक्स्ट को चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर 11 आंसर दियो which one of the following statement is true about ability and ability grouping कोन तू which the following statement is true about the ability and ability grouping कोन आसी आंसर a student learn better in homogeneous group ना homogeneous group हबो नाही हबो कि homogeneous group नेगेटिव वर्ड ये उठे चलो ये हबो नाही homogeneous group For smooth and effective teaching, class should be homogeneous. Children are intolerant and don't accept difference. Teacher may use multi-level teaching to cater to different ability groups. तो कौन होवे क्वेश्चन आंसर देखो प्रथम कथा होची homogeneous कथा आसिला मात्रे हबो नाही. Children are intolerant and don't accept difference. एटा हबो आंसर हबो teacher may use multi-level teaching to cater to different ability of group. Option D होची क्वेश्चन आंसर. कोन हबो डी होवे क्वेश्चन आंसर रेडी नेक्स्ट को करिवा क्वेश्चन 11 परे 12 आछि आंसर आसुनिसु पिला गाय नो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग स्टाइल विजुअल एक्युरल फैक्चुअल टेक्सचुअल कोन आसीबो जानिथिबे तीन प्रकार विजुअल ऑडिट और कोन आसीबो काइनेस्थेटिक हैला विजुअल मान देखि जोटा सिखिबा और सुनि कि सिखिबा और काइनेस्थेटिक मींस डूइंग बाय डूइंग ओके कोन आसीबो 12 आंसर दियो ता लर्निंग स्टाइल तीन प्रकार कोइ देली कोन आसीबो यस लर्निंग स्टाइल एबन को देखा कोन विजुअल तीन प्रकार कोइ विजुअल और ऑडिट ऑडियोस माने सुनि कि और कोन काइनेस्थेटिक डूइंग ऑप्शन ए एठी कोन हबो विजुअल आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली को फैक्टर ता लर्निंग अफेक्ट पकाय लर्निंग पॉजिटिवली कोन आसीबो फियर ऑफ फेल्युअर कंपटीशन विथ पीयर्स meaningful association pressure from parents positive कहउछि कोन कहउछि पॉजिटिव कहउछि देखो फियर ऑफ फेल्युअर तो नेगेटिव होबो नाही कंपटीशन नेगेटिव वर्ड प्रेशर पर नेगेटिव कोन होबो मीनिंगफुल एसोसिएशन हैला ऑप्शन सी हो आंसर ऑप्शन सी होछि क्वेश्चन आंसर बुझि पाले 13 नंबर चलो 13 परे 14 Suresh generally likes to study alone in quiet room whereas Madan likes to study in a group with his friends. This is because of difference in their desk. देखो सुरेश एकाकी गोटे घर भितरे पढिया पे पसंद करूची मदन ग्रुपिंग हेई सांग मन सहित पढिया पे पसंद करूची तो एटा कोन डिफरेंस ता कोन वैल्यू ना एप्टीट्यूड्स लर्निंग स्टाइल लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी कोन हो 14 आंसर डी लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी रॉन्ग आंसर देखो ये कोन होबो ताहले सीताकर डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल अछि ये सुनो ये तो एका को पढिया पे भल लागे ताको ग्रुप रे पढाबो कोन होबो लेवल रिफ्लेक्टिविटी आंसर लर्निंग स्टाइल यस 14 कोन होबो सुकांती गायत्री यस लिसा कोन होबो
लर्निंग स्टाइल से भीतर डिफरेंस लर्निंग स्टाइल अच्छा ऑप्शन सी नेक्स्ट 15 आंसर देंतु टीचिंग लर्नर एट वेरिंग लेवल्स difficulty based on ability of individual learner is known as selective instruction हला decision errorless differentiated instruction for the teaching learner at a varying level of difficulty based on the ability individual learner is known as the selective decision errorless and differentiated कोन हबो देखो ए क्वेश्चन से कोन हबो differentiated instruction ऑप्शन डी एठी कहिछि ना वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी त कोन हबो differentiated instruction नेक्स्ट ठीक अछि लास्ट में जणे बेज का केतरा ठीक अछि ला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आंसर देंतो मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग is the stimulation simultaneous use of visual auditory and tactile clear and dash a sense of enhanced learning जोटा हम कहली वर्तमान visual auditory tactile output vestibular perceptual observational kinesthetic कहंतु multi sensory approach of teaching learning multi sensory approach ला simultaneously use of कोन हबो visual हबो yes देखिबे auditory visual auditory tactile आ कोन आसीबो kinesthetic ऑप्शन डी kinesthetic sense to enhance learning बुझिला कि नै ठीक अछि समस्त बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर 17 आंसर देंतु देखो differentiated instruction is dash differentiated instruction is dash using group that never change using a variety of grouping to meet student needs doing something different for every student in the class disorderly of undisciplined student activity तो कोन आसीबो कोंतु differentiated instruction is dash ना हम कहि परिबा differentiated instruction ता कोन रे ना using a variety differentiated कहि छि माने कोन करे variety जिंस आसीबो using a variety of grouping to meet student needs clear ऑप्शन बी देखो difference आसला मात्रे variety जिंस आसीबो ओके 70 नंबर आंसर कोन बताले बी using a variety of grouping to meet student needs next question करंतु 80 number which one of the following is the most suitable to improve children's learning कोंतु children's learning पे most suitable कोड आसीबो teacher should explain the content using different example and illustration all type of learning material should be there in the class teacher should facilitate children to interact with each other on real student regular assessment test should be conducted ना प्रथम कथा हम एलिमिनेशन देखिबा कोन होउची प्रथम कथा रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ना एटा कोन इंप्रूव चाइल्ड लर्निंग को इंप्रूव करिवो टीचर शुड एक्सप्लेन कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास टीचर प्रथम ये भी होबो नाही टीचर एटा होबो आंसर देखो टीचर शुड एक्सप्लेन एटा टीचर शुड एक्सप्लेन डिफरेंट एटा हिजो टीचर सेंट्रिक टीचर का डिफरेंट एग्जांपल दे बुझाइबो कंटेंट को ना ये होबो नाही त कोन होबो टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन ते मोर अप्रोप्रिएट कोन होबो सी होबो कि पिला माने निज निज भीतर रियल लाइफ रो एग्जांपल नै सिचुएशन नै कि कोन करिवे इंटरैक्ट करिवे ओके आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन 19 लर्नर शुड नॉट बी एनकरेज्ड टू डैश शुड नॉट कहू छला शुड नॉट बी एनकरेज्ड कहू 19 नंबर आंसर दियो participate in as many co-curricular activities as possible memorize all the memorize hela matre eta negative word should not deichi mane कोना बोलो ना should not encourage memorize कथा hela matre negative word answer हबो जेहेतु should not deichi answer का ऑप्शन बी as many questions as possible both inside and outside the class ठीक है activity interactivity with the learner in the group हां ये positive उचित आंसर हबो बी 19 नंबर कोन हबो बी memorize all the answer to question of which the teacher may ask okay 19 नंबर डी हबो ना बी हबो memorize to one negative 20 when a child gets bored while doing a task it is a sign that देखो पटे पिलामान को दिया होची टास्क दिया हिची से बोरिंग होची यार अर्थ कोन तुम माने बोरिंग केते बेले हो नोट अछि तुम माने बोरिंग केते बेले हो the task may have become mechanically repetitive the child is not intelligent the child is not capable of learning the child needs to be disciplined कोनतु जते बेले गोटे पिलाटे कोन करूची गोटे पाठ पढिया पई बोर फील करूची तो ए कहार गोटे लक्षण तो कुह कोन हबो 18 नंबर प्रीति प्रकाश लेट रो छ लाइव को आसो ए हबो यस
तो जेहेतु गोटे क्वेश्चन तुम मैंने रिपीटेडली गोटे काम कले इरिटेट हो ना बोर हो ना ये जति गोटे काम कर तुम डेली डेली भात आलू भर्ता खाइब तो इरिटेट हो ना सेम थिंग कहूँ जदि से कौन कहूँ सेम टास्क रिपीट कर से बोर फील कर ऑप्शन ए इज मोर अप्रोप्रिएट डन नेक्स्ट a teacher uses audio visual aids and physical activities in her teaching because they dash teacher audio visual aids and physical activities can you provide a diversion to the learner utilize maximum number of sense to enhance learning provide relief to the teacher facilitate effective assessment देखो टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑडियो सहित विजुअल ता सहित फिजिकल एक्टिविटी ता माने सी कोन करछि मैक्सिमम नंबर सेंस को एनहांस करछि ऑप्शन बी हो आंसर यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू एनहांस लर्निंग ऑप्शन बी होछि मोर अप्रोप्रिएट ठीक अछि मोनालिसा जो कंति गायत्री 22 हां लिसा प्रथमेश बी ठीक अछि द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट डेस the following are the instructional strategies except this देखो except देइछेला कोटा नुह instruction strategy देखो contextualizing instruction ठीक अछि providing learner control instruction observing patiently the activities of the student done by them during learning assessing learning तो कोन आसी कोटा देइछि देखो except देइछि तो कोन हबो yes assessing learning हला एटा एक्चुअली कोन आफ्टर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है आफ्टर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी असेसमेंट लर्निंग होता है बट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी असेसमेंट लर्निंग का ऑप्शन डी होगा आंसर क्लियर 22 कोन हो डी होगा आंसर बुझी पाले कि नहीं ठीक अछि 23 में द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट फॉर एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू थिंक एंड लर्निंग इनसाइड कोन आसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू थिंक एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन home assignment given frequently individual task done by the learner allowing student to take some decision about what to learn and how to learn passive listening for long period of time कोन आसीबे क्वेश्चन आंसर से कोच कोटा आसीबा appropriate for environment conductive of thinking and learning of children तो ये कोन होबा आंसर ताले यस देखो होम असाइनमेंट गिवन फ्रीक्वेंटली होबार चांस है इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर होबो ना देखो स्टूडेंट मानन को अलाउ करा हबो सम डिसीजन नेबा पे अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न ये होउची आपण मानका चालचली पिला मानन को ऊपर फोकस कर पिला माने जे डिसीजन नउछ तो आंसर होबो ऑप्शन सी पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम होबो कि ना आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट मु करिबा 24 ए पीटी टीचर हला फिजिकल एजुकेशन टीचर wants her students to improve fielding in the game of cricket which one of the following strategy will best help his student achieve that goal p teacher ता पिला मानन को कोन करूची इंप्रूव करिया पई क्रिकेट फील्डिंग ए मान को भीतर कोटा बेस्ट स्ट्रेटजी होबा दरकार एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस हां ए लॉजिक बुझेबो ना खेल होउची ना रीजनिंग पढा होउची लॉजिक बुझेबो हैं खेला फील्डिंग द्वारा कोन हो एटा बुझेबो कि एक्सप्लेन करियो कि ना डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग व्हाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व देखो तुमे निजे करी के देखिबो केमिति को फील्डिंग करिवो टीपी टीचर डेमोन्स्ट्रेट करिवो हला डेमोन्स्ट्रेट केमिति करा होउछ केमिति कैच धरा होउछ केमिति फील्डिंग करबे देखिबो ये हेई पारे बट नॉट श्योर गिव स्टूडेंट्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग ये होबो टेल्स टू हाउ टू इंप्रूव इट इज देम टू लर्न फील्ड देखो एटा तुम शिखियो ना भाषण मारिबो कि ना तो ये मध्य कटि गला बी आउ डी रहउची बी डी भीतर कोन होबो देखो डेमोन्स्ट्रेट करिवो की करिवो पी टीचर तो एटा हे जिवो कोन आपन मानकर टीचर सेंट्रिक टीचर करी देखो पिला माने देखिबे एटा हो चाइल्ड सेंट्रिक पिला माने करिवे प्रैक्टिस करिवे तो गिव स्टूडेंट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द फील्डिंग आंसर विल बी ऑप्शन सी पिला माने तो प्रैक्टिस करिवे से अनुसार समय सिखिबे ना आंसर का बस सी गिव स्टूडेंट्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स लर्निंग इन ए क्लासरूम कोटा सपोर्ट करियो लर्निंग इन क्लासरूम को इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल फॉर पीरियड 40 मिनिट 50 मिनिट कर दबा सेटा कोन हबो तापर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन तो टेस्ट संख्या बढ़ा दो सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर स्टिकिंग टू द वन पर्टिकुलर मेथड इंस्ट्रक्शन मेंटेन ना ना एटा तो हवा चांस है
तो कौन हम पिला मान को सपोर्ट करिवो सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चाइल्ड बाय द टीचर ऑप्शन सी होची क्वेश्चन आंसर कौन हम सी आंसर डी रे कौन अरे पीटी टीचर तमे बुझेबो ना इंपोर्टेंट टा कौन फील्ड रे इंपोर्टेंट कौन बुझेबो किटी फील्डिंग रे इंपोर्टेंट बुझेबो ना को स्ट्रेटजी करबा फील्डिंग प्रैक्टिस करबो ला आंसर कौन सपोर्ट ए क्वेश्चन आंसर सपोर्टिंग ऑटोनॉमी ऑफ द चिल्ड्रन बाय द टीचर ठीक अछि 26 आंसर दियो learning experience should be planned in a manner so as to make learning meaningful which one of the following learning experience does not facilitate देखो तो does not देइछे does not facilitate meaningful learning for the children एति प्रकाश कांति लेसा हां कोन कोन आसीबो repetition based on mere recall of content formulating देखो एति कोच कोन does not कोच ना कोन कोच does not facilitate to meaningful कोच presentation on the topic discussion and debate on the topic forwarding question ये तीनटा हबो कोन हबो ये तीनटा हइबो और फास्ट हबो कि रे ना आंसर हबो ऑप्शन ए हडा recall content कोच नेक्स्ट what type of learning is associated with Pavlov famous experiment where dogs learn to associate a bell ringing with food कोन तो What type of learning is associated with Pavlov famous experiment where dogs learn to associate a bell ringing with food? कौन आसियो शास्त्रीय अनुबंधन कौन हम आंसर हम क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन सी हैला कौन हम सी होबे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट मु करिबा 27 पर 28 which the following is not a component of the information processing model of memory कौन हम encoding retrieval erasure storage कौन हम क्वेश्चन आंसर सी ये हला सी ठीक अछि तापर 29 आंसर दे 29 कोन कहू छै देखो in operant conditioning what is the term for the process of weakening the a behavior by removing a desirable stimulus after behavior occurs देखो से कहू छी what is the term for the process of weakening a behavior by removing a desirable stimulus after the behavior occurs तो कोन होय ये होउची पनिशमेंट हबो yes or no पर को पनिशमेंट हबो पॉजिटिव पनिशमेंट की ना वीकनिंग बिहेवियर बाय रिमूव कराउछ तो पॉजिटिव होर चांस नै कोन बताले नेगेटिव पनिशमेंट ऑप्शन डी नेगेटिव पनिशमेंट चलो नेक्स्ट ये 29 क्वेश्चन है नेटवर्क घुरुज हेली ओके नेक्स्ट देखिबा व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग occurs when individuals learn by observing a imitating the behavior of others 30 number question answer समस्ते homework clear ये क्वेश्चन आंसर समस्ते मते कमेंट बॉक्स जणेबे क्वेश्चन आंसर ता कोन आसीबो 30 क्वेश्चन मु डिस्कशन करिछि आपन कमेंट रे जणेबे केते मार्क आपन को सिक्योर हैला या स्कोर आपन जणेबे 30 आउट ऑफ डैश एंड लास्ट क्वेश्चन आंसर मते कमेंट बॉक्स में आते जणेबे ओके आज 30 क्वेश्चन मु डिस्कशन कर देछि बहुत इंपोर्टेंट जो माने टेलीग्राम जॉइन करंतु थैंक यू ऑफ यू गुड नाइट बाय बाय टेक केयर नवाथले निहात एबे सब्सक्राइब करबे सांग मान शेयर करबे जदि भल लागुछि आपन सांग मान के शेयर करबे थैंक यू ऑफ यू बाय बाय टेक केयर कमेंट बॉक्स निहात जणेबे लास्ट क्वेश्चन आंसर कोन आसीबो थैंक यू